So in this video, I would like to just clear 1 or 2 points, okay, related to question number 6 of exercise 3B. In last video, we have covered question number 6 of exercise 3B, and which we have found the length and the parameter of the square. And parameter of square, we got 64.8 centimeter, okay, just by adding all the sides of a square together. Okay, so in this way, we got parameter. The value of parameter of the square is 64.8. According to your book, your answer is 65.0 centimeter to 3 significant figure. Okay, so you may also approximate this value to 65 centimeter, or you can also write it as like 65.0 centimeter to 3 significant figure. Okay, आप सिर्फ सिंपल 65 भी लिख सकते हो, बट 65 लिखना ये होगा कि सिर्फ और सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स की इक्वल होगा वो, ठीक है, बिकॉज हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक अपना आंसर चाहिए. तो 64.8 इज अप्रोक्सीमेटेड टू द नियरेस्ट होल नंबर 65, बट सिंपल 65 लिखना मीन्स के 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. 65.0 आप लिखोगे तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स अकॉर्डिंग टू अवर रूल नंबर 3 दैट इन अ डेसिमल 0 आफ्टर नॉन 0 इज सिग्निफिकेंट. सो वो रूल जहन में रखते हुए आप 64.8 सेंटीमीटर को अप्रोक्सीमेट कर सकते हो 65.0 सेंटीमीटर टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर. ओके, सो आई होप सो ये क्यूरी जो है क्लियर हो गई होगी, क्योंकि जो है मैं अप्रोक्सीमेट मैंने नहीं किया था. कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग तो हमारा ठीक है, बट जो है अकॉर्डिंग टू योर बुक हमें बुक से भी थोड़ा सा इन टच रहना है, आंसर लेकर आना है. सारी चीजें हमारी कैलकुलेशन पे ही बेस नहीं करती, ठीक है. सो दिस वे, so I hope so यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा. If you have any query, so you may comment your query anytime, and I will try to respond them as soon as possible. So thank you for watching this part of question number 6. So thank you for watching. If you like this video, so don't forget to subscribe my channel Taaleem for everyone, and hit like button and press bell icon. Okay, so thank you once again. Allah Hafiz.